real estate barely gets a seat it deserves on the table. I go to a lot of podcasts. I say like 50 75 lakhs का 1 BHK आता है तो मेरे मुंबई वाला ऑडियंस बोलता है कहाँ मिलता है रियल एस्टेट. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू. इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट कि आज लिया कल निकल गए परसों वापस एंटर हो गए. इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. Now let's say if someone with a 5 crore or a 50 crore who want to think about the real estate, is it just a big house or can we think in the layers like residentials हो गया, commercials हो गए, second homes या फिर rental portfolio? How someone can think about it when they are placing in their whole portfolio? So just in case one goes like one rental guy is not acting very well, you have the other source coming in. So buying multiple properties makes more sense. The rentals of a flat are 40% above in last 1.5 year, which has never happened. The reason, and there are few micro markets in Mumbai where there are no rent. As an real estate investor, मुझे लगता है आपके घर से भी आपने दिल नहीं लगाना चाहिए. Though it's not an investment when you are staying in a home, but then you would want to upgrade. Like I always say this, I've said this multiple times on a lot of TV channels that even Mr. Ambani is looking for a new Antilla now. Now, last 2 to 3 years has been a turning point. We have seen real estate across Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad surge in both the sentiments as well as prices also. Office leasing has been recovering, luxury houses are selling out in days, and even Tier 2 cities are also seeing the similar kind of demand. So, Sachintan, what are you seeing exactly on the ground? Are we in the boom? या फिर the Indian real estate sector has come into the maturity phase? There was a movie called Zindagi Na Milegi Dobara. I think everyone watched in COVID and people have realized before anything goes wrong, let's travel. लोग बोलते हैं affordable luxury. Affordable luxury is a myth. और ये जैसे मैंने आपको ध्रुव बोला, ये next 10 years का cycle मैं नहीं देख रहा कि market में slow down आवे. One practical advice I want from you. So at Appratus, we help clients allocate intelligently, and the key is not how much do you put, but what role it plays. So now let's say if someone is listening today is building their portfolio. So what's your advice, Mr. Chintan? But a lot of Indian investors have started buying properties in Dubai. 4 years back, Goa का market एक साल में 2 गुना हो गया. So right now Goa is correcting. The prices have gone down. Secondly, Airbnb का एक अचानक everyone no one wanted to use hotels. They were opting for Airbnb. Future of Indian real estate. Now let's say someone who is planning for 2040, 2050. So आज का current generation है. So how they should look at the real estate? Hello everyone, welcome back to another episode of Abacus. So today let me start with a question. What's the first thing most Indians buy when they come into the serious money? Is it the equity? Is it the gold? Is it the startups? No, it's the land and the real estate. But yet, in the most modern financial planning conversation, real estate barely gets a seat it deserves on the table. So today we ask, where exactly does the real estate fit into the modern wealth planning? Are we missing out on the India's biggest, oldest, and the most emotionally charged asset story? To explore this, I am thrilled to be joined by someone who not only understands the numbers but also the pulse of the Indian real estate. Chintan Vasani, a real estate entrepreneur, investor, educator, and someone who helped shaping up the conversations around property across India and Dubai. So, welcome, Mr. Chintan. We are very excited to have you. Thanks, Ru, for having me and super excited to learn and know more about everything from you, Dhruv. Great, sir. Great. So, Mr. Chintan, let's begin here. So, in India, a property is not just an investment. It's a mode of a emotion. It's a family legacy. It's a status. It's a security. But if we talk from the wealth manager's lens, we are now asking how do we evolve that emotion into a strategy? How do we place real estate not just in someone's heart, but also in their portfolio with an intent, purpose, and in performance as well? So, Dhruv, I'll tell you what in India or whenever you understand, real estate is like roti kapda makan. It's a necessity.
So even before, you can live without buying stocks, you can live without buying a high end car, but you would require food, you would require clothes to wear, and you would require a home to stay. So it's more of a necessity than something of an investment model. But because the touch and feel of real estate is so nice, and people it is one of the oldest asset classes, the most trusted ones in the world, and especially Indian mentality, mein real estate goes perfectly. So, we don't need a devil's advocate, when we have to talk about real estate in this particular, uh, time. But then one thing is very sure right now, how fractional ownership और ये सब जो नए नए चीजें आई है, where people are looking for investment which might not be 50 lakhs, 80 lakhs, 1 crore. When I go to a lot of podcasts, I say 50, 75 lakhs का 1 BHK आता है, तो मेरे मुंबई वाला ऑडियंस बोलता है कहाँ मिलता है. And people from tier 2 tier 3 cities like 1 crore 1 BHK. I'm like, in Mumbai it is practically not possible to make anything below 1 crore. If you want to make a 1 BHK, but when you see India as per se, it's a decent amount for an investment into real estate. Real estate, I'll be very honest to you, it's an investment which is not कि आज लिया कल निकल गए परसों वापस enter हो गए. It's a long term thing, and you only and only make money when you are invested. You should only exit from a real estate when you have a different real estate plan to enter. That would make more sense, and the main money that you make in real estate is in the long term. अगर कोई बोले कि शॉर्ट टर्म में 1-2 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसका एंट्री कॉस्ट इज़ वेरी हाई, बिकॉज़ देयर स्टैम्प ड्यूटी, देयर इज़ रजिस्ट्रेशन, देयर आर क्लोजिंग कॉस्ट, वो सब चीज़ें काफ़ी हाई होता है. बट अगर आपको रात को अच्छे से सोना है ध्रुव, यू नीड योर पीसफुल माइंड. टुडे एनीथिंग हैपेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देयर इज़ अ स्टेटमेंट मेड बाय एनी लीडर, स्टॉक मार्केट यू विल सी करेक्शन, बट दैट डज़ नॉट हैपन इन रियल एस्टेट. बिकॉज़ लोगों ने बहुत सारी साइकिल्स देखी है. सेकेंडली, वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हाई वी वर्क थ्रू इज डेटा. टुडे व्हेन यू से हु कैन बाय होम इन इंडिया, द होम बाइंग कैपेसिटी, only 25% of the home people who can actually buy a home in India have bought. 75% लोगों का अभी तक जो होम ओनरशिप का ड्रीम है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है. सो द फैमिलीज दैट कैन बाय होम ओनली 25%. सो अगर मैं कितना भी भागू 10 साल तक, 1 decade, 2 decade, I'll only be able to touch 40% of the home buying capacity of India. So, it's a very long cycle for Indians. And that is the reason real estate is a very safe bet to play for anyone. Right. So this definitely makes sense. मतलब when you are comparing with the stocks, equities, मतलब कुछ भी geopolitics में हो रहा है तो it have a direct impact. Looking at the whole portfolio, whole diversified portfolio, so real estate plays a very huge role in it. So basically equity gives you the growth. So debt gives you the stability. Gold आपको protection देता है. But real estate is something, it gives you something very unique. Tangibility, leverage, yield. And sometimes it gives it gives everything exactly, and something there is also this generational value as well. So when we are talking about the Mumbai and all those things, so Mr. Chintan, based on your experience, now let's say if someone with a 5 crore or a 50 crore who want to think about the real estate, is it just a big house, or can we think in the layers like residentials हो गया, commercials हो गए, second homes या फिर rental portfolio? How someone can think about it when they are placing in their whole portfolio? So I'll be very honest to you. Your first target should always be to make a home for yourself. A residential home, अगर आप रेंट पे रह रहे हो और फिर आप सोचो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, आई एम स्टिल वेरी ओल्ड स्कूल. सो यू नीड अ होम ऑफ योर ओन. That should be your first target in your life. Then, if you want to get into investment, I would always suggest buying a commercial property is better than buying a residential property, because in last decade or last few years, the rental incomes that people have made in a commercial were almost 2-3% per annum more than what was in residential. So commercial makes more sense to have. Yes, it's a bit difficult
to look for a person to rent it out in commercial, but then it's not also very difficult because you know how SMEs, MSMEs, ये जो अभी growth अपन देख रहे हैं इंडिया का, there are people who are looking for small offices. So I would always say rather than buying a very big property, you should buy multiple 3 4 properties. So just in case one goes, one rental guy is not acting very well, you have the other source coming in. So, buying multiple properties makes more sense. The most important thing whenever anyone is investing, I say please invest to a location which is very near to where you stay. Because, geographically, if you are near to that investment, you can have an eye about what is happening. आपको पता है क्या चल रहा है. Life is more easier for you. A commercial is a bit better than residential, but something has changed in Mumbai. You might have heard about redevelopment taking over Mumbai. So right now, the the rentals of a flat are 40% above in last 1.5 year, which has never happened. The reason, and there are few micro markets in Mumbai where there are no rent. I was on NDTV few days back. बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं मुंबई में जहाँ पे आपको रेंटल फ्लैट्स ही अवेलेबल नहीं. So, automatically something has happened that residential has also become more investable, क्योंकि आज आपकी जगह को आप मतलब 10 जन रेंट पे लेने के लिए खड़े हैं. So, इट्स अ सेलर्स मार्केट अपन जो बोलते हैं कि रेंटल्स मार्केट, कि भाई मेरे को मेरे चॉइस का मेरे पैसा मुझे मिलेगा वैसा. सो आई वुड सजेस्ट बाई स्मॉलर यूनिट्स. आपका आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए, मेरे को रेंट पर देना है. तो आजकल प्री लीज प्रॉपर्टीज भी मिलता है, प्रॉपर्टीज विच आर ऑलरेडी लीज. सो योर प्लान शुड बी वेरी क्लियर. एक भी दिन अगर आपको रेंट नहीं आ रहा तो आपका लॉस हो रहा है, बिकॉज कैम्प तो आपको भर रहा है, ये कॉमन एरिया मेंटेनेंस इज व्हाट यू आर सपोज टू पे. इफ इट इज ऑन अ बैंक लोन यू हैव टू पे योर EMIs. सो आउटफ्लो इनफ्लो वो दोनों आपका डे वन को डिफाइन होना चाहिए, फिर ही आपने कोई भी चीज इन्वेस्ट करना चाहिए. Right, exactly. So, Mr. Chintan, correct me if I am wrong. मतलब कि when we are talking about the rental properties, so real estate has always been seen as a very emotional. मतलब कि लोगों को बहुत एकदम वो properties या home पैसे उसको लेके बहुत emotional हो जाते हैं. तो मतलब I don't know, I was going through some data कि मतलब there are lot of vacant houses as well. मतलब कि लोगों ने खरीद तो लिया है, but because it is very much emotional, so they don't rent it to someone. कि मतलब कि नहीं, वो पड़ा हुआ है आपके अंदर, लेकिन दे डोंट रेंट इट. सो देयर आर लॉट ऑफ वेकेंट हाउसेस एज़ वेल. इज दिस समथिंग ट्रू? सी इट ऑल डिपेंड्स. मतलब मैं आपको वही बोलता हूँ, एक इन्वेस्टर, अभी कुछ लोग लाइक आई नो अ फ्यू पीपल हु बाय टाटा शेयर्स एंड दे नेवर वांट टू शेयर सेल. He's like, no, I'm very close to Mr. Ratan Tata. That's the so वो तो मतलब ऐसे तो यार everyone will have their own psychology. Everyone will have their own working style. But as an real estate investor, मुझे लगता है आपके घर से भी आपने दिल नहीं लगाना चाहिए. The reason being, it's an investment today, though it's not an investment when you are staying in a home, but then you would want to upgrade. Like uh, I always say this, I've said this multiple times on a lot of TV channels, that even Mr. Ambani is looking for a new Antila now. Because, as your family grows, everyone wants to buy a bigger home. They might have everything, but फिर भी उनको छोटा पड़ेगा. जैसे families बड़े होंगे, requirements बढ़ेंगे. So, आप जो बोल रहे हो ध्रुव, यस, वैसे बहुत लोग हैं आज भी जिनको अपनी फोरफादर प्रॉपर्टीज से बहुत लगाव होता है, और होना भी चाहिए. बट देन व्हेन यू आर थिंकिंग एज इन्वेस्टर, यू हैव टू थिंक एज एन इन्वेस्टर एंड देन हैव ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग इन योर बैक ऑफ योर माइंड. Exactly. I agree on all the things. So, now, Mr. Chintan, let's understand about what's actually happening in the Indian real estate market, right? So, मतलब now we are talking about the Mumbai as well. So now if we can zoom in the market itself. Now, last 2 to 3 years has been a turning point. We have seen real estate across Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad surge in both the sentiment as well as prices also. Office leasing has been recovering. Luxury houses are selling out in days, and even tier 2 cities are also seeing the similar kind of demand. So, Mr. Chintan, what are you seeing exactly on the ground? Are we in the boom या फिर the Indian real estate sector has come into the maturity phase? I think Dhruv, with
there was a movie called Zindagi Na Milegi Dobara that I think everyone watched in COVID, and people have realized ke, before anything goes wrong, let's travel, let's go to the best of the restaurant, let's start spending as in community, as Indians. Apna, people have started spending. And one very interesting thing what happened post COVID was people were looking for bigger homes. People are right now looking for bigger homes. So अगर आप जितना देखोगे स्टडी करोगे, पीपल जो छोटे घर बना रहे थे डेवलपर्स, उन्होंने अपना फ्लोर प्लान चेंज करके घर और बड़े कर दिए. इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 BHK का फ्लोर प्लेट, दे हैव अ 4 BHK का वन सिंगल ऑफरिंग. एंड पीपल वांट balcony homes, people want larger bedrooms, people want larger living rooms, they want a project which has multiple amenities, clubhouse. So luxury has uh, gained much more in the entire ecosystem of real estate. मेरा डेटा थोड़ा जो अभी स्टडी कर रहा हूँ, और मैं बहुत जगहों पे मैंने बहुत वोकल वे में बोलना चालू किया कि राइट नाउ देयर आर वेरी फ्यू अफोर्डेबल होम्स अवेलेबल. लाइक आई ऑलवेज से देयर इज अफोर्डेबल, देयर इज लग्जरी, और एक फेक लोग बोलते हैं अफोर्डेबल लग्जरी. अफोर्डेबल लग्जरी इज अ मिथ. ऐसा कुछ नहीं होता है. सो अफोर्डेबल लग्जरी, ये दो चीज ऐसी है कि देयर आर दिस टू सेगमेंट्स व्हिच बोथ आर डूइंग डिसेंट. बट अफोर्डेबल में अभी नंबर ऑफ यूनिट्स आर वेरी लेस. सो इफ अ स्मार्ट डेवलपर वांट्स टू लॉन्च समथिंग, अगर वो अफोर्डेबल लाएगा तो उसका डिमांड बहुत है, क्योंकि सप्लाई थोड़ा कम है. लग्ज़री का येस डिमांड भी है, सप्लाई भी है. और ये जैसे मैंने आपको ध्रुव बोला, ये नेक्स्ट 10 इयर्स का साइकिल मैं नहीं देख रहा कि मार्केट में स्लो डाउन आवे. बिकॉज़ लोगों के सैलरीज़ भी ध्रुव बढ़ रहे हैं, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है. उसी के साथ जो सबसे पहले लोगों को ज़रूरत होता है घर का, जो कोविड के पहले लोग रेंट पे रहना प्रेफ़र करते थे, नाउ दे वांट टू ओन इट. चेंज हैज़ हैपेंड वेयर पीपल वांट टू ओन इट, एंड दैट इज़ हेल्पिंग एज़ एन इंडस्ट्री. अ सो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री. और उसमें अगर आप इन्वेस्टर हो, सो बाइंग समथिंग विच कैन बी इजीली रेंटेड, और अ प्रॉपर्टी विच इज अ प्री लीज प्रॉपर्टी, आपको पता है ये ब्रांड ऑलरेडी रेंट पर लगने वाला है, दैट वुड बी अ स्मार्टर मूव फॉर एनीवन. एंड मुझे नेक्स्ट 10 years तक आई एम वेरी बुलिश अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. Okay. So very interesting. Okay, so you are seeing the real estate sector is in the boom right now. So, Mr. Chintan, one practical advice I want from you. Now, let's say what investors should do. So, at Uppercrust, we help clients allocate intelligently, and the key is not how much do you put, but what role it plays. So, now let's say if someone is listening today is building their portfolio. So, what's your advice, Mr. Chintan? How much they can think of the real estate as a real active part of their wealth? Right. So I always say, there's a cheat code, or whenever you want to invest, you need to have a real estate channel partner with you when you're buying a property. Because you are doing your own business. आप आपका मतलब आप आपका wealth कमाने के पीछे हो, और उसमें वो भी खुद करने जाओगे वेबसाइट पे जाके, वैसे नहीं होगा. So I always say try to have a nice channel partner with you who is actually guiding you buy a real estate, why to invest into real estate. He's asking you the right questions. क्योंकि आज कोई भी बोले कि मुझे इन्वेस्ट करना है, एक स्मार्ट रियल एस्टेट चैनल पार्टनर पहले पूछेगा कि सर व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड योर इन्वेस्टमेंट. सो a good channel partner is the must. Second is a chartered accountant, because a lot of people, ध्रुव, दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग, आई डोंट नो इफ यू आर टचिंग इट, बट अ लॉट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड बाइंग प्रॉपर्टीज इन दुबई. व्हेन दे बाय समथिंग इन अब्रॉड, वहां पे दुनिया भर के टैक्सेस लगते हैं. आप जब पैसा यहाँ से दूसरे कंट्री में लेके जाते हो, दूसरे कंट्री में आपने जाके इन्वेस्ट किया, उसको रेंटल इनकम वहाँ पे आपने कमाया, और वो रेंटल इनकम आप वापस इंडिया लेके आए, या वो प्रॉपर्टी आपने उधर बेचा, और वो पैसा वापस जब आपको इंडिया लेके आना होता है, उस पे आपका जो टैक्सेशन अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, तो आपका पूरा कैलकुलेशन कैन गो हेवायर. एंड 99% पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, एंड दे आर लाइक दे विल नॉट इवन कंसल्ट their चार्टर्ड अकाउंटेंट. So you need to have a dream team of a CA, a chartered accountant, and a lawyer. A lawyer will actually tell you how are you supposed to brief the documents.
आज अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हो आफ्टर रेरा, सो अगर आप रीडेवलपमेंट आप अगर अब आज के तारीख में कोई भी स्टेट ऑफ इंडिया में इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू हैव टू ओनली बाय प्रॉपर्टी विच इज अ रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, द गवर्नमेंट्स एक्ट ऑफ इंडिया, उसका रेगुलेटेड नंबर है, वो ही आपको प्रॉपर्टी खरीद। अगर नहीं है तो आपके कितने भी अच्छे दोस्त हैं आप मत खरीदो। और यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी विच इज एन ओल्ड प्रॉपर्टी, always consult these three people, make a dream team, then you have to invest. That's a very simple like you know that वो नहीं क्योंकि it's like an investment that you are doing. आज आपको उसके फीस थोड़े महंगे पड़ेंगे बट आपका लाइफ बहुत आपका इजी हो जाएगा। And one more hack, Dhruv, let me also share is always go for a housing loan whenever you are buying a home. What happens कि whenever a bank is funding, they do all the legal checkups before giving a पैसा। और आज आप जब लोन लेते हो बैंक से ध्रुव, तभी उसमें प्री पेनल्टी अगर आपने एडवांस में आपने पैसा भर दिया, प्री पेमेंट कर दिया आपने, तो उस पे आपको कभी कोई चार्जेस नहीं लगते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पैसा बचाना है ना, तो आप फिर भी लोन, अगर पैसा है तो भी आप लोन लो और फिर आप भर देना। सो इट्स वन ऑफ द हैक दैट आई यूजुअली टेल ऑल माय फ्रेंड्स व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग। Right, very insightful. So, now, Mr. Jindan, the future of Indian real estate. Now, let's say someone who is planning for 2040, 2050, जो आज का current generation है. So, how they should look at the real estate. So, where do you see the biggest opportunities? Tier 2 cities, co-living spaces also are in trending right now. Sustainable spaces, rental yield का क्या होगा for the next 10, 20, 30 years? And personally, what are you excited about this space over the next 10 years? So, Dhruv, I love studying the market and love understanding what is the future. Affordable, yes. Luxury, yes. Affordable luxury is a myth. It does not exist. But there is one very interesting thing which from last 3, 4 years I'm getting myself ready. It's called ethical luxury. So anything that will be green in next 5 years will be the best that you can bet on. So we, WiseBiz, we are turning ourselves into one. WiseBiz One, organic, natural, eco-friendly. So from 2030 through whatever project that we'll touch will only and only be green. So I would want to appeal to everyone who is actually watching this, try to invest in a project which is green, या वो green project वो ऐसे उसकी capacity होना चाहिए। Green is not only making green, it's also living the lifestyle. Like to give you an idea, I'm doing something in Lonavala where I'm entire construction will be green. But if Dhruv wants to buy a villa in Lonavala, उसको अंडरटेकिंग देना होगा कि मैं हमेशा विला में एक इलेक्ट्रिक कार में ही आऊँगा। फिर ध्रुव का जो फॉसेट रहेगा उसके अपना व्हेनेवर ही इज गोइंग फॉर शावर, द शावर विल ओनली वर्क फॉर 3 मिनट्स, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर ध्रुव को वो वापस चालू करना है। सो ऑटो 3 मिनट्स में साइकिल में वो बंद होते जाएगा। एक ऐप होगा ध्रुव के पास जिसमें उसको अपडेट्स मिलेगा कि आज उसके दिन में उन्होंने कितना वाटर कंज्यूम किया, कितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम किया। देयर इज अ गेमिफाइंग वर्जन बिटवीन ऑल द विला ओनर्स। देयर इज there's a competition between them कि वो कितने ज़्यादा green थे. So somewhere Dhruv we are seeing that as the future where uh, green will be the dominating factor and that will make our product more classier, nicer. जैसे आपको पता होगा कि ध्रुव आज 7-8 साल पहले आपको किसी ने बोला चल आज सैलेड खाने जाते हैं, तो अपन बोलते थे चल दैट्स नॉट माय स्टाइल, आई वांट टू हैव समथिंग nice. But today, there are salad places which are much expensive than any of the high-end restaurants. So something very similar is what we are seeing, and people are going organic, people are going green. So green is something that you can bet on even in real estate and even in stock market. Whenever you start any of the news channels, people say, the defense hai, green hai. Whereas I think in real estate also green is one thing which you can bet on very big, and we are betting on very big. Perfect, perfect. कोई भी सेक्टर की बात करें, सस्टेनेबल, ग्रीन, एवरीथिंग इज अ फ्यूचर एंड इट शुड बी। मतलब कि जो एनवायरनमेंट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस हम देख रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस इज समथिंग वी शुड। And कैसा है कि with and Dhruv, everything is very your travel and your personal touch will make a very big difference. Like 4 years back,
गोवा का मार्केट 1 साल में 2 गुना हो गया था। 1 करोड़ का विला 2.5 करोड़ का हो गया था, 2 करोड़ का हो गया था। अभी वहाँ पे अगर आप पूरा स्टडी करोगे, पीपल फ्रॉम दिल्ली बॉट होम्स इन गोवा। दिल्ली वालों ने गोवा में घर खरीदा। रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ, तभी रशियंस एंड यूक्रेनियंस बिलियनियर्स स्टार्टेड बाइंग होम्स इन दुबई। नाउ द मोमेंट एवरीथिंग गेट्स चिल्ड आउट, सब ठीक होने लगता है, तो क्या होता है, वो लोग शायद पैसा वापस मंगाते हैं, तभी आपको करेक्शन शायद दिखता है मार्केट। सो राइट नाउ गोवा इज करेक्टिंग, द प्राइसेस हैव गॉन डाउन। सेकेंडली एयरबीएनबी का एक अचानक, एवरीवन, नो वन वांटेड टू यूज होटल्स, they were opting for Airbnb. Now people again are going towards hotels. So it's a trend which you personally will understand. Secondly, मैं जब इंडिया एंड पाकिस्तान का भी बीच में इशू चल रहा था, so I have a lot of my friends who are into restaurant business. So that's how I collect my market research. So I was talking to a friend of mine who has a restaurant में, and at 5:30 is like, चिंतन यार आज वीकेंड है और बुकिंग ही नहीं हुआ है, 30-40% खाली है। मैं बोला ठीक है, चल क्या चल रहा है, ऐसे मैं थोड़ा रिपोर्ट ले रहा था। देन सीज फायर अनाउंस हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। द मोमेंट सीज फायर अनाउंस हुआ, ध्रुव, ही टोल्ड मी इन 5 minutes माई एंटायर रेस्टोरेंट वॉज बुक्ड। So this gives you a market research where now what we have become are very वो कोई भी न्यूज आता है ना, उस पर रिएक्शन भी बहुत फास्ट देते हैं, एंड वी वांट टू सेलिब्रेट। सो दैट्स हाउ। सो नाउ एनीवन हु इज वाचिंग दिस, नासिक में कुंभ आने वाला है। सो नासिक कैन बी वन इंटरेस्टिंग प्लेस वेयर वी कैन सी गुड फ्यूचर इन द वेरी नियर फ्यूचर। बहुत कम टाइम में जब कुंभ आएगा, बिकॉज आपको याद होगा कि जब प्रयागराज में there were people who entered Prayagraj just before Mahakumbh, and वहाँ पे 3 to 4 times उन्होंने अपना पैसा किया। So Nashik can be one very interesting place where we can see a good boom because of like a event like Kumbh. Hope I gave justice to your question. Yes, it was perfect. So definitely we also want to happen in Mahakumbh basically. So these kind of papers, so it drives things. So perfect, Chetan. The overall conversation was really an eye-opening. Real estate sector isn't going away, I believe. In fact, as you have shown us today, it might be the anchor that the modern wealth actually requires, actually needs. So thank you so much for being with us, Chetan. It was a very interesting, very insightful conversation that you have shared. Thank you, Dhruv, and hope to do more such one-on-one with you very in the coming future. Perfect. Sure. Definitely, Mr. Stephen. It was very insightful, very interesting.